Okay guys, so now let's discuss about parametric coordinates. All right, so parametric coordinates हमने सर्कल के लिए भी डिस्कस किया था, राइट? हाउ टू राइट डाउन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स. तो बेसिकली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज क्या है? हाँ, हम क्यों पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करते हैं? बिकॉज व्हाट हैपेंस, सी इफ यू जनरली लेट सपोज इफ यू हैव अ पैराबोला, बेटा ठीक है, हमारे पास कोई भी पैराबोला है, लेट सपोज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है, दिस इज अवर पैराबोला. नाउ इफ आई वांट टू अज्यूम एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, आई कैन अज्यूम इट एज x, y. All right, and whatever information is giving to me in the question, I can use that and solve my question, because I know there is one relation between this x and y, that is y square will be always equal to 4ax. So if you see in a manner, we have two variables over here. यहाँ पर दो वेरिएबल आपको दिख रहे होंगे, एक x है और एक y है. बट इनफैक्ट अगर हम इसे देखें तो ये एक ही वेरिएबल है. We don't have two variables here, we have only one variable y, because we have a relation between y and x. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग x एंड y, बिकॉज इट सीम्स लाइक वी हैव टू वेरिएबल्स, वी टेक हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, जहां पर क्या होता है कि दो पॉइंट्स जो आपके हैं, दो कोऑर्डिनेट्स x एंड y कोऑर्डिनेट्स, दे कम in terms of a single perimeter. Okay, so solving questions become little bit easy for us, and that's why only we use parametric coordinates. ठीक है, तो गाइज यहां पर जो हम पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट आवर स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. So for this parabola, the parametric coordinates which we use are 80 square, 280. क्या होते हैं बेटा? 80 square, 280. जहां पर a क्या है? a is nothing but it is your basically this part, right? 4a जो है यही a यहां पर हम यूज कर रहे हैं, and t is the perimeter. All right, t is the parameter over here. तो parameter t को अगर आप चेंज करेंगे, so your point will move on your parabola, and you can clearly see you have only one variable. Right, we have only one variable t over here, and easily you can prove it. Like if you put x equal to 80 square, this will come 4a square t square, right? So y square is coming this, and if you take y will come equal to 280, sorry, not 80 square. x अगर 80 square है तो y कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर y will come equal to 280. All right, so these are your parametric coordinates for your standard parabola. ठीक है, so if p is the point on the parabola, then the parametric representation is something like this, guys. So for our first standard parabola y square equal to 4ax, the parametric coordinates are 80 square, 280. ठीक है, अब अगर हमारे पास सेकेंड टाइप का पैराबोला आ जाता है, that is opening leftward, right? y square equal to minus 4ax. तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा? x नेगेटिव हो जाता है, so x will become minus 80 square and y will remain same, that is your 280. x square equal to 4ay किया, so what is the difference between these two? x and y we will interchange, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में भी यही हो जाएगा, x and y will interchange, so x will become 280 and y क्या आ जाएगा बेटा आपका? 80 square. और लास्ट में अगर फिर से माइनस कर दिया तो y की जगह देखो minus 80 square आ गया. Alright, so this is how you can write down parametric coordinates for 4 standard parabolas. ठीक है, now if we have a shifted parabola, right, the vertex of this parabola is shifted, right? So how you will write parametric coordinates for this? So it's just, I have told you already, if it is y minus k square is equal to 4 into x minus h, तो बेटा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सो फॉर अ स्टैंडर्ड दिस पैराबोला विथ 0,0 एज वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट इज 80 स्क्वायर. अब अगर वर्टेक्स h, k पे शिफ्ट हो गया, सो व्हाट विल से द x कोऑर्डिनेट विल नाउ बिकम h प्लस 80 स्क्वायर. हम क्या करेंगे बेटा? उसमें h ऐड कर देंगे, राइट? एंड y कोऑर्डिनेट विल बिकम k प्लस 280. Alright, here it was simple 280. Now if you have a shifted vertex, आप क्या कर दोगे? k simply वहां पर add कर दोगे. So this will be the parametric coordinates for your shifted vertex. Alright, shifted vertex parabola. Alright, so this you have to keep in your mind. Okay, we use it very oftenly. Alright, जैसे सर्कल में हम a cos थीटा a sin थीटा बोलते थे, यहां पर 80 स्क्वायर, 280 होगा, जहां पर पैरामीटर क्या है बेटा? t. एज ए अगर आप t को चेंज करते रहेंगे तो आपका पॉइंट चेंज होता रहेगा. ऑलराइट, सो जनरली यू नो समटाइम्स यू विल सी इन क्वेश्चंस रिटर्न, लेट्स सपोज अ पॉइंट t1 लाइज ऑन द पैराबोला. तो पॉइंट t1 का मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t1, सो दैट मींस दे आर आस्किंग यू टू टेक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस 81 square, 281. So instead of saying that
let us assume the parametric coordinates as 81 square comma 281. In the questions you will see they will directly say if the point P is T1. T1 means they are asking you, they are saying you that the parameter is T1, so that means the coordinates will become 81 square comma 281 depending upon the which kind of parabola we are talking about. Okay, but you can also write simply the point as T1. Okay, chaliye. Let's see a question. So the parametric representation 3 plus t square comma 3t minus 2 represent a parabola. Find directrix, focus and vertex. Okay, तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में बेटा दे दिया गया है एक कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ t, राइट? दिस इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स. नाउ इट इज गिवन दैट दिस रिप्रेजेंट अ पैराबोला. बट इफ यू सी दिस यू माइट एक्चुअली सी कि सर ये पैराबोला कैसे, अभी तो आपने 80 स्क्वायर कॉमा 280 इस टाइप का दिखाया, ये तो कुछ डिफरेंट आ रहा है, इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करें? सो गाइस इट्स वेरी इजी. व्हाट वी कैन से, इफ दीज आर पॉइंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कर्व, कैन वी से द x कोऑर्डिनेट इज गिवन एज 3 plus t square beta, right? And the y coordinate is given as 3t minus 2. See, can I write t square equal to x minus 3 from here, and can I write t equals to y plus 2 by 3 from here? All right, now both the variable, like I have find out that t is equal to y plus 2 by 3 and t square equal to x minus 3. So here guys, if I eliminate t using both these equations, can I write this will become equal to y plus 2 by 3 whole square, right? And now if you just multiply 3 square will be 9. So 9 into x minus 3 is equal to y plus 2 square. So guys, can you see this is nothing but this is a equation of a parabola, right? It is looking like y square equal to 4ax na, but here obviously the vertex is shifted. ठीक है, यहां पर वर्टेक्स क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया. आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द वर्टेक्स, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स गाइस? सो x minus h, y minus k. So y minus of minus 2. So we already know if this is your form, then vertex guys, vertex will be what? Vertex will be you can say h comma k, that will be 3 comma minus 2. ठीक है, तो vertex for this parabola will be 3 comma minus 2. Okay, but now the vertex is 3 comma minus 2. What is the focus? A focus क्या होगा? So guys, I have already told you, whenever you have a shifted vertex, what you can do, you can just keep the basic points in your mind. What are the basic points? So let's suppose if 3 comma minus 2 somewhere over here, okay, if this is your parabola, it is y square equal to 4ax kind of parabola. So obviously the axis will be parallel to x-axis, right? So now if this is my vertex 3 comma minus 2, I know if I move a distance parallel to my axis, on my axis I will have my focus. So what is a? 4a is equal to 9, right? 4a is equal to 9. So can I say that a is equal to 9 by 4? Okay, so this point will become 3 plus a, right? Focus का x coordinate क्या होगा? 3 plus a, that will be 3 plus 9 by 4 comma minus 2. This will be your focus, and we obviously know a units behind I will have my directrix which will be perpendicular to my axis. So obviously this point, its x coordinate, basically the equation of line will be x equal to constant, and what will be the x coordinate of this point? 3 minus 9 by 4. So you can say equation of directrix will be x equal to 3 minus 9 by 4. Okay, so you can calculate, this will come 4 3s are 12 minus 9, that will be 3 by 4, and here 12 plus 9, that will be what? 21 by 4 comma minus 2. Okay, so these are your points. Vertex is 3 comma minus 2, directrix is x equal to 3 by 4, and the point your focus beta is 21 by 4 comma minus 2. So understand the concept. If x and y coordinates are given to you in terms of parameter, eliminate t, get your equation, and then you already know if this is your equation of parabola. We have already seen how to write all the different terminologies for it. Clear है ये? Okay, good. चलिए
Then guys, next we have chord joining 2 points. Okay, so now we are going to discuss some results using our parametric coordinates, and these are very important results. Okay, so chord joining 2 points का क्या मतलब है? Now if I want to find equation of a chord which joins, alright, again for a standard parabola beta, y square equal to 4ax, joining the 2 points, that is t1 and t2. Right, P and Q, which are given by T1 and T2. So I have already told you, beta, what is the meaning that P point is T1? That means we are taking its parametric coordinates. So if the parameter is T1, the coordinates will be a T1 square comma 2a T1. And similarly for Q, beta, it will be a T2 square comma 2a T2. ठीक है? Now, अगर बेटा अब आपको इसकी equation लिखना है, if you want to find its equation, can you use 2-point form? अरे 2-point form directly use कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा, right? So or you can find out the slope first and then apply the slope point form. Okay, so let's find its slope. What will be its slope? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Right? So guys, what I can do, I can take 2a common from the numerator, it will become t1 minus t2. I can take a common. So if you take a common, beta, what you will see? t1 square minus t2 square. a square minus b square लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? a minus b into a plus b. t1 minus t2 gone, a and a gone. Guys, we are getting the value of slope as 2 upon t1 plus t2. So this is a very important result, that is slope of the chord joining 2 points T1 and T2 will be 2 upon T1 plus T2. Okay, it will be 2 upon T1 plus T2. This is an important result, guys. You can remember it. Deriving it is also very easy, but if you remember this, you know, you can solve some questions very directly. So you can directly say कि अगर दो points हैं T1, T2, तो उन्हें join करने वाली chord का slope क्या होगा? It will be 2 upon T1 plus T2. And now if you have slope, equation लिखना तो यार बहुत easy है, right? It will be y minus y1 equal to m into x minus x1. So here if you just cross multiply and simplify, so guys, you will get the equation something like this. Okay, after all the simplifications, you will get this equation. Okay, y into t1 plus t2 is equal to 2x plus 2a t1 t2. This result you might not actually, you know, need to remember. ओके अगर याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्लोप आपको याद रखना है. देखो स्लोप एक इंपॉर्टेंट टर्म है, 2 अपॉन, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है ना यार, 2 अपॉन t1 प्लस t2. उसके बाद इक्वेशन तो निकाल ही लोगे. देखो यहां मल्टीप्लाई करो, 2a t1 स्क्वायर जो है वो यहां पे माइनस 2a t1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? t1 प्लस t2 इंटू y इक्वल टू 2x एंड माइनस 2a t1 t2, जिसको आप इधर ले जा सकते हो, है ना? तो 2x प्लस 2a t1 t2 इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी. ओके, सो दिस यू कैन, if you can remember then very good, otherwise slope तो याद रखो. देखो chord को ज्वाइन करने वाली दो पॉइंट्स t1 t2 को ज्वाइन करने वाले chord का स्लोप क्या होगा? 2 upon t1 plus t2. ठीक है बेटा? So this is the first important result, that is chord joining 2 points. Okay, now so if a chord join t1 and t2 subtend a right angle at the vertex, again a very important result. अगर क्या बोला गया है बेटा? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है, अगर वो ओरिजिन पे, वर्टेक्स पे, राइट, जो कि इस केस में वर्टेक्स होगा, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड द स्टैंडर्ड यू नो आवर पैराबोला, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला लिया है यहाँ पे, लेट सपोज, ठीक है, थोड़ा डायग्राम में ओरिजिन पे होना चाहिए था ये, इसको 0,0 मान लेते हैं वर्टेक्स को. ठीक है, सो इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट, क्या बोला है बेटा? chord joining t1 t2 subtend a right angle. right angle means 90 डिग्री. तो अगर ये chord 90 डिग्री subtend कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है. Then so guys, there is an important result which we can remember. So see, if I say that, okay, let's suppose this point is O. Okay, so if slope of OP is m1 and slope of OQ is m2, so you can clearly see the angle between these two lines OP and OQ is 90. And guys, if angle between two lines is 90, हमें क्या पता है? कि product of their slope is equal to -1.
तो m1 बेटा अगर निकालें तो m1 क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज व्हाट, इट इज at1 स्क्वायर कॉमा 2at1, दिस पॉइंट इज at2 स्क्वायर कॉमा 2at2। ठीक है, तो अब बस आप y2 माइनस y1 करिए तो m1 देखिए कितना आएगा, 2at1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय at1 square minus 0, that will be this, and similarly m2 will be also 2at2 minus 0 upon at2 square minus 0. This product will be minus 1, a gone, 1 t1 gone, again a gone, t2 gone, so 2 into 2 4, and here you will have t1 t2 equal to minus 1. So can you see, you are getting a very easy and important result that t1 into t2 will be equal to -4. ठीक है, तो अगर बेटा आपका ये कॉर्ड ओरिजिन पे वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है तो हम क्या बोलेंगे, दैट t1 into t2 will be equal to -4. अगेन अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सो t1 into t2 कितना आ जाएगा आपका, -4 आ गया. ठीक है, तो स्लोप क्या था, इस पर्टिकुलर कॉर्ड का स्लोप था 2/t1 प्लस t2. अगर ये 90 डिग्री करती है, ऑलवेज इट विल नॉट मेक 90, बट इफ इट मेक्स 90, t1 t2 विल बी इक्वल टू -4.